The director Praveen Satru, he called me and he said, "I want you to do a film with me." So I said, "But how come you want me to do a Telugu film?" So he said, "Well, I mean, you are being seen speaking in Telugu." Yeah. And everybody's loving your work, and Aarya has become so successful. So, I mean, I did tell him that, "Hi, that's somebody's dub for me, na? You know." Yeah. He said, "Of course I know that you're not speaking Telugu, you're speaking in Hindi and it's dubbed." सबके लिए कहीं ना कहीं एक सपना रहता है कि नागार्जुन जैसे एक्टर के साथ काम करना. क्या आपके लिए भी कुछ ऐसा था कि हमेशा से चाहते थे कि उनके साथ काम करने का मौका मिले? So I was telling Praveen that, I've been his fan for 30 years now, and after 30 years I'm getting a chance to actually work with him. Yeah. So he was like, yes. Wow. DTC के बाद जब आप फिर लोकल ट्रेन में चढ़ते हो बम्बई में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज़ you're like, ये तो मैं जानता हूँ. ये तो ऐसे खेल है. लेकिन अगर कोई और शहर का बंदा या लेडी यहाँ पर आए और लोकल ट्रेन में चढ़े, तो they'll get a shock कि ये कैसे हुआ. तो दिल्ली वालों को शॉक करना बहुत मुश्किल काम है. मतलब बहुत ही एक अलग लेवल का कुछ करना पड़ेगा उनको शॉक करने के लिए. मेरा तो जो दिल्ली सपना था एक्टिंग का, वो तो पूरा हो ही रहा है. अब मेरा दूसरा दिल्ली सपना जो रह गया था, वो भी थोड़ा बहुत पूरा हो रहा है. फॉर की कहानी करके. हाय मनीष जी, कैसे हो आप? हाय सोनाक्षी, आई एम वेरी वेल. सो कितने टाइम बाद हम मिल रहे हैं, वर्चुअली ही सही, बट it's been such a long time. Yes, it's been 4 years, nahin? 4 years. So 4 years or a little more maybe. Yeah, a little more, I guess. So a lot of people here don't know that we have worked together on a project like 4 or more years back, and it's such a pleasure कि मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, and I was super excited to talk to you on a personal level. I was very excited. So nice, so nice. So Manish ji, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा congratulations for the Ghost. It has got released and it's receiving tremendous response right now. तो आज मैं बात कर रही हूँ जिससे वो है एक underworld don, Lala. So hi Lala, how are you? I hope आप मुझे ऐसे नहीं मारने वाले हो यहाँ पर. नहीं, आपने लाला, आप किसी अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर को आपने इतना हंसते हुए देखा है कभी? Never. Right. So how was the experience and how did it happen? I was so surprised to see you in the trailer because I did the review of the trailer as well. Oh really? Yeah. So actually it was very it was just like I mean, I have no connection with Telugu cinema dur tak na. Matlab, as a working person, I don't have any. As a working actor, there's no connections that I have with with the industry in Hyderabad. And so what happened is that it seems that when Aarya came out, it came out in about 6 different languages. At least 4 of them, I think, or 3 of them were in southern languages. Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada even. So what happened is that it became very popular not only for Hindi speaking audience, but also for apparently Telugu speaking audience. Yeah. Because they saw it in Telugu. Yeah. And, because Aarya, I mean, all India, it became very popular. So the director Praveen Satru, he called me and he said, "I want you to do a film with me." So I said, "But how come you want me to do a Telugu film?" So he said, "Well, I mean, you are being seen speaking in Telugu." Yeah. And everybody's loving your work, and Aarya has become so successful. So, I mean, I did tell him that, "Hi, that's somebody's dub for me, na? You know." He said, "Of course I know that you're not speaking Telugu, you're speaking in Hindi and it's dubbed." But he said, "We'll manage, we'll figure it out." And that's how it actually started off. So it was very, he's a lovely guy, and we had a great time working together. So ये पहली बार हुआ जब आपने तेलुगु में कोई फिल्म करी जिसमें आप तेलुगु में बात भी कर रहे हो. कितना डिफिकल्ट था, या मे बी बोलूं कितना चैलेंजिंग था एज एन एक्टर, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से आप रहे हो और जिस तरह की फिल्में और प्रोजेक्ट्स आपने किया उसमें यू स्पोकन इन हिंदी एंड इंग्लिश टिल नाउ. So Telugu was a little difficult language to learn. It's not like Punjabi कि हम पंजाबी में फिर भी कुछ words हिंदी वाले बोलते हैं, but Telugu is completely different language. So कितना difficult था वो करना. So what happens is कि obviously अगर आप language की तरफ से उसको देखो तो obviously it's a big mountain ना. Yeah.
to climb. But the thing is that you have to look at it through the story of the film. So the story runs in a particular way. The story involves particular events that are happening, and according to those events, your scenes are written. And then according to those scenes, you have your lines. Right. Which in this case happened to be in Telugu. Yeah. So Praveen had a very good team of assistants who were of great help to me in learning the diction and learning the accent and saying the words correctly. Okay. So we actually had Zoom meetings with his assistant from Hyderabad. I had a Zoom session with him over 4-5 days, where he just basically worked with me on getting the words said correctly. Okay. You know, so at least जैसे एक शब्द है तो उसको correctly कैसे बोलना है. So we did that. Then of course we went to set. Our first set was in Goa. So once we went there, then again the assistants were of great help. And also you have to then remember the lines, no? Right. But also what happens is that when you don't know a language, but you know the translated meaning of those lines, then it makes it easier. Yeah, true. Also, to be fair, it's an action drama, which means that there is speaking, but there is a lot of action in it. Yeah, true. You know, so वो उसमें luckily वो निकल जाता है. But the important part is not only speaking on set. What actually became very interesting was that as we started filming, Praveen started saying that so this character of Lala is basically not from Hyderabad. In his mind, he came to Hyderabad from somewhere else in the country, and hence his name is Lala. In Hyderabad, a Telugu speaking person will not be called Lala. Exactly. So he said, the way you've been speaking in Telugu on set, it has a certain accent to it. And if I get a Telugu speaking actor to dub for you, he will never be able to get the flavor of your accent, which is very different from a regular Telugu speaking accent. So why don't you try and dub for it as well? Okay. So then I ended up dubbing for it as well. So what you hear in the film is actually my voice. Yeah. So that is possibly one of the biggest challenges I have faced in my acting career. And I've faced some challenges, but this one really took the cake. It was very challenging thing to do. But so we had one session of 4 days where we did the first draft. जैसे लिखने में drafts लिखते हैं ना लोग पहले. We did a working draft of the dubbing, which then he heard and said, okay, we can go to the next step. Then his person from Hyderabad came to Bombay, and we spent another 4 days in the studio. Okay. Getting it correct. And then it was done. And now what you hear is the original voice. Yeah. I mean, I have to say this because since it was so challenging, इसलिए I think ये आपके लिए बहुत खास भी रहा होगा. And कहीं ना कहीं आपको एक और language आ गई है, and आपके cap में एक और feather add हो चुका है, which is a great thing, of course. And I think all doors खुल गए हैं कहीं ना कहीं. एक बात बताओ. So नागार्जुन सर भी इस फिल्म में थे. And I think for every actor, कोई बड़ा एक्टर हो, कोई ना हो, कोई पॉपुलर एक्टर हो, कोई ना हो, लेकिन सबके लिए कहीं ना कहीं एक सपना रहता है कि नागार्जुन जैसे एक्टर के साथ काम करना. क्या आपके लिए भी कुछ ऐसा था कि हमेशा से चाहते थे कि उनके साथ काम करने का मौका मिले? बिल्कुल 100%. क्योंकि जब नागार्जुन सर की फिल्म आई थी शिवा 1990 में, तो मैं कॉलेज में था तब. अच्छा. दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो जब ये फिल्म आई और हम लोग ऑलरेडी मतलब 18-19 साल के थे हम लोग, और हमने एक्टिंग हम लोगों ने शुरू कर दी थी करना तब. एमेच्योर एक्टिंग होती थी ना कॉलेज में, और तो फेस्टिवल्स में वगैरह. तो मैंने शिवा देखी, एग्जाम से मुझे लगा कि इनको तो मैंने कभी नहीं देखा पहले, कहाँ से आए हैं, कौन है ये. और फिर उनके बारे में थोड़ा सा पता किया मैंने कि ये एक्चुअली उनकी डेब्यू फिल्म थी ये. और since then I was very taken by his acting style, which was a very quiet, strong presence. ज़्यादा बोलना नहीं, लेकिन he managed to hold a lot of very strong emotion within himself. I really like that style. So I was telling Praveen that I've been his fan for
30 years now, and after 30 years, I'm getting a chance to actually work with him. Yeah. So he was like, yes. Wow. And then, of course, when we met, it was very nice. He's a lovely, lovely gentleman, Nag sir. And we had a wonderful time on set. I mean, my work with him is only in the climax. Yeah. The hero and the villain only meet in the climax. Yeah. Right. But it was a long, drawn-out climax. We shot over 5 days. So I had a very nice working relationship with him there. Yeah. उनकी एक और फिल्म भी आई थी अभी ब्रह्मास्त्र, और आई रिमेम्बर बिकॉज उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आई अटेंडेड इन दिल्ली. सो उसमें भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने एक चीज बोली थी नागार्जुन सर के बारे में कि जब भी जिस दिन भी उनका सीन होता था शूट, तो उस दिन सेट का माहौल एकदम अलग होता था, वेरी लाइट और मतलब थोड़ी खुशी, या वेरी इजी. सो आपने भी ये चीज कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करी अपने टाइम पर? 100%, क्योंकि जो सीन हम शूट कर रहे थे उसमें इट्स full of mayhem and violence. Yeah. So all 5 days, all that was happening was fake blood on the set, swords, guns, dead bodies lying on the set, puppets showcasing dead bodies lying on the set. You know, it was mayhem. Or matlab furniture toota hua sara. But Nag sir brings a sense of ease to a set, because he's just really, he's, you know, he's very chill and very easy. And also the action that he does is done in a very particular, easy way, but very effectively. You know, and he also likes to, in the middle of shots, sometimes have a chat about this and that. And so I was like, this is home. There's no problem here, you know, at all. Yeah. Because it was so lovely. Yeah. So तेलुगु में ये फिल्म रिलीज हुई 5th of October को, एंड हिंदी में रिलीज हुई 7th of October, यानी कि अभी जो हुआ. तो अभी किस तरह का रिस्पांस आपने पर्सनली ऑब्जर्व किया इस फिल्म को लेकर, एंड स्पेशली अपने कैरेक्टर को लेकर? बिकॉज I have to tell you this because you are looking very powerful in the film. You are looking extremely powerful. और मेरे को कहीं ना कहीं वो शेखावत याद आया, because उसमें भी वो स्वैग कहीं ना कहीं था जो आर्या में मैंने देखा. एंड मतलब आपका ओवरऑल इसको लेकर कैसी ऑब्जर्वेशन रही है कि कैसा रिस्पांस आ रहा है when it comes to your character? Well, I mean, we know that in commercial cinema anywhere in the country, the swag of the villain is a very big part of you know, the film. जी. जितना उसका swag होगा उतना ही ज्यादा audience का चाव उसमें बढ़ेगा. सही बात. And in the Telugu speaking audience, I've noticed that they really love swag. So if there is a bad guy portraying a villain, like a villainous character, then they like the fact that that person comes with a particular swag, and you know, there's smoke billowing, and there is the walk is always on high speed. There's always goons around, and so, you know, so they shoot it. They also look at the story from the villain's point of view in a very large way. You know, so you know, it's the classic idea of really trump up the villain in a very huge way, because when finally the hero kills the villain, then you should realize that somebody very big and powerful has been dealt with. You know, that also makes the heroism go even larger. Right. You know, that classic Ram or Ravan ki jo kahani hoti. So Hmm. they really like their, you know, like the villain to have that swag. And it's always very enjoyable playing that. Right. And you look so good, and I think you portray villainous kind of characters very beautifully. Because as I said, आर्या में भी your screen presence was something else. जब भी वो आपकी शेखावत की एंट्री होगी किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीन में, तो आपको पता ही कुछ जबरदस्त होने वाला है अभी. So वहां पर भी I have to give you credit for that, because I binge watched आर्या as well. So एक बात बताइए, ये बहुत ही क्यूरियसली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कैसे कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, बिकॉज आपने टीवी भी किया है, आप फिल्म्स भी कर रहे हैं, अब तो ओटीटी भी कर रहे हैं. बिकॉज बहुत टाइम तक ये चीज हमेशा रही है कि जो लोग टीवी करते हैं, जो एक्टर्स, वो टीवी तक ही सीमित रह जाते हैं, फिल्में उनको नहीं मिलती, या मे बी वो दे आल्सो डोंट रियली अप्रोच फॉर दैट. बट आपने कैसे कभी खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया इस चीज को लेके, बिकॉज आप दोनों जगह एक्टिव रहे हो? हाँ, मतलब अब तीनों और एक्चुअली थिएटर को इन्वॉल्व करें तो फिर चारों जगह एक्टिव रहा. Yes. So, you know, I really believe that an actor has to be
in tune with the mediums which are available to him or her in the time that they are working. So अगर आपके पास सहूलियत टेलीविजन की है तो आपको अपना काम टेलीविजन पर करना है, और अगर वो सहूलियत बढ़कर फिल्मों में और ओटीटी में और थिएटर में तो है ही, वहां जा रही है, तो आपको चारों मीडियम्स में अपना काम करना है। मैंने रेडियो पर भी अपनी आवाज एड्स के लिए दी है, तो yeah, so so even that medium I've sort of dealt with a little bit. So I really believe that an actor today, especially contemporary actors, must have the wherewithal to go between as many kinds of platforms as possible. Right. और अगर बैलेंस बना के रखें, जैसे अगर कभी-कभी बैलेंस क्यूअर हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा काम एक मीडियम पर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर दूसरे मीडियम थोड़े से आपको देखना बंद कर देते हैं. So luckily what I've managed to do, knowingly or unknowingly sometimes, that I've managed to make a healthy balance between all the different mediums. Exactly. So I've managed to do that, which I'm very grateful for, and I hope to continue to do that. सबसे ज्यादा मजा किस वाले मीडियम में अभी तक आया? बिकॉज कोई तो एक ऐसा मीडियम होगा जिसको पता है इसमें जब मैं काम करता हूँ तो आई फील समथिंग एल्स. Well, हर मीडियम का अपना एक चाव होता है. मुझे हमेशा लगता है कि टेलीविजन का जो मीडियम है उसकी जो वर्किंग रिगर है, इस रिगर के साथ आपको उस पे काम करना पड़ता है, because you're always, I mean, that we're always fighting against time, especially on a television set. That rigor is a very special rigor, which actually gave me a lot of confidence and encouragement to move into other mediums. It started with television first, then I went on to movies, and now with OTT as well. फिर हर मीडियम की रीच अलग अलग है. Right, absolutely. Right. और अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो I started with the theater और live work. So उसका अलग एक चार्म होता है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका रिएक्शन आपको वहीं का वहीं उसी मोमेंट पर मिल जाएगा. Exactly. So between theater and television, what that did was that working on both these mediums really gave me a very strong foundation of training to move into cinema and to move into now OTT. Yeah. Where and in any medium, logistics of a day are very important. Right. How much work we can get done in a day. I'm sure as a journalist you understand that very well. Yeah. So all these things came together quite nicely and sort of gave me a nice strong foundation to be able to work on now any medium that is available. So I'm basically working on all of them. Yeah, because that only makes you special as an actor, and I think कहीं ना कहीं वो versatility जो actor में आती है वो इससे भी आती है, because the kind of mediums that you're working on at the same time and in the same era. एक और बात बताइए कि आपके हिसाब से जब अपने अपने करियर ग्राफ को देखते हो, अभी तक का कौन सा ऐसा कैरेक्टर रहा है जिससे लोग आपको आज भी सबसे ज्यादा पहचानते हैं कि आप कहीं जाते हो? क्योंकि एक्टर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसके नाम से चाहे उसको कोई जाने ना जाने, लेकिन उनके कैरेक्टर से लोग उनको जरूर रेजोनेट करके बोलते हैं कि हाँ मैंने आपको देखा है, कि मैंने आपको के प्ले करते हुए देखा है, या मैंने आपको ये प्ले करते हुए देखा है. ऐसा कौन सा कैरेक्टर आया आपके लिए जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने आपको पहचाना? जो जिस सीरीज पे हम लोगों ने काम किया था साथ में, उसके चलते लोग मुझे बहुत बार अन्ना उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया. कि आके हेलो अन्ना कैसे हैं आप. और तो what I've been actually very fortunate कि most of the characters that I've played have managed to make some kind of an impact on audiences. And तो जैसे रॉकेट संघ का सुनील पुरी था जी को लेकर, और हमारे सीरीज का के था उसको लेकर भी, फिर जन्नत 2 मैंने भट्ट साहब के साथ की थी, उसका जो कैरेक्टर था एक बहुत जाट अक्खड़ किस्म का इंसान, उसको लेकर भी. फिर ऑफ कोर्स जब आर्या आई तो फिर शेखावत के चलते तो मतलब मैं अपने खुद ही मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत धूम ही मच गई उसकी, बिकॉज इट जस्ट वर्क सो वेल. तो मैं एक्चुअली राजस्थान में ट्रैवल कर रहा था उसके बाद ही जैसलमेर में, और पीछे दूर से मुझे शेखावत की आवाज आई, कोई बुला रहा था शेखावत सा. So so I've been very lucky that way. I've been the characters have managed to really make a connect with
with the audiences. फिर ऐसा लगता है उनको कि आप उनके अपने हो, जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर उनको लगता है कि क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कि इनको क्या लग रहा है कि ये एक्चुअली मुझे पर्सनली जानते हैं या इन्होंने मेरे को काम करते हुए देखा है। You know, those two, that line starts blurring, and once that line starts blurring with the audience, that's a very fulfilling thing to happen for an actor. अच्छा, ऐसा है कि आपको भी लगता है कि दिल्ली के लोगों में कुछ तो बात होती है, फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन को ले लो, खुद को ले लो, शाहरुख खान को ले लो, they just make a mark in the industry whenever they go to Mumbai. कुछ तो है, देखो, you have to accept it. No, I mean the thing is कि दिल्ली is, जब आप बंबई में आकर रहते हो तो आपको लगता है कि ना बॉम्बे इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिटी। यहाँ पे एक काम करने का तरीका है। यहाँ पर अगर लोगों को बस पर चढ़ना है तो उसके लिए वो लाइन बनाते हैं और वेट करते हैं लाइन में ही खड़े होकर। आपको पता है कि दिल्ली में ना कभी ऐसा हुआ था पहले और ना ही कभी होगा ऐसा। तो बिकॉज दिल्ली हैज दिस वाइल्डनेस टू इट, सो वो आपको प्रिपेयर कर देती है किसी भी सिचुएशन के लिए। तो मुझे लगता है वी ऑल ग्रो अप इन अ प्लेस वेयर एवरीथिंग वाज जस्ट सो क्रेजी एंड वाइल्ड। मतलब अगर आपको डीटीसी में चढ़ना है तो उसके लिए आपको द्वंद करके चढ़ना पड़ेगा, है ना। तो डीटीसी के बाद जब आप फिर लोकल ट्रेन में चढ़ते हो बंबई में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज़ यू लाइक ये तो मैं जानता हूँ, ये तो ऐसे खेल है। लेकिन अगर कोई और शहर का बंदा या लेडी यहाँ पर आए और लोकल ट्रेन में चढ़े तो they'll get a shock कि ये कैसे हो रहा है। So दिल्ली वालों को शॉक करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब बहुत ही एक अलग लेवल का कुछ करना पड़ेगा उनको शॉक करने के लिए। ऐसी थोड़ी होता है दिल्ली से हूँ वाली चीज, आगे मैं नहीं बोल पाऊंगी बट ठीक है। तो ये जो दिल्ली वाले मेरे आगे आज बैठे हैं, ये जो दिल्ली वाले आज मेरे आगे बैठे हैं, इनमें एक्टिंग का कीड़ा कब आया था? रियली वांट टू डू दैट। एक्टिंग का कीड़ा तो मुझे लगता है 14-15 साल की उम्र से प्रैक्टिकली आ गया था। प्रैक्टिकली, ओके, मतलब आई एक्चुअली मैनेज्ड टू गेट ऑन स्टेज बाय द टाइम आई वाज 15, लेकिन जो कीड़ा था वो मुझे लगता है वो 7-8 साल की उम्र से ही होगा जरूर। एंड घर वालों ने फुल ऑन सपोर्ट किया उस टाइम जब आपने बताया होगा ने पहली बार कि एक्टर बनना है? तो यार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे 2 बड़े भाई हैं, और तो मतलब जो भी दिक्कतें फेस करनी पड़ी वो मेरे दोनों बड़े भाइयों को ही फेस करनी पड़ी। मुझे छोड़ दिया गया कि तेरे को जो करना है कर। सारे छोटे बच्चों की स्टोरी है ये। हाँ, तो मेरी भी वही स्टोरी है। तो मुझ पे ज्यादा ना किसी ने कोई प्रेशर डाला, ना किसी ने मुझसे ज्यादा पूछा या पुश करने की कोशिश की। तो आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब द अदर ऑप्शन वाज आई वुड हैव गॉन टू द आर्मी। इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी। अच्छा, ओके। तो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे फौज में जाना है। और जब एक्टिंग शुरू हुई और मैं कॉलेज में और एक्टिव हो गया तो फिर मुझे लगा यार दूसरा ऑप्शन एक्टिंग भी हो सकती है। अच्छा, ओ, और देख लो आपने ऐसा शो भी किया दी रिसेंटली शूरवीर, जिसके लिए आपको क्रिटिकली अक्लेम किया गया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस शो को। एंड आई थिंक द स्टोरी लाइन, जबकि ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी के ऊपर शोज पहले नहीं बने थे, पहले भी बने थे, बट देयर वाज सम फ्रेशनेस टू दिस वन। Plus the cast was so great. Everyone was so well suited to their characters. I think that was also one of the reasons कि उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो कहीं ना कहीं अब एक्टर तो आप हो ही, एंड एक्टिंग का आई थिंक सबसे अच्छा पार्ट ही कहीं ना कहीं है कि आपको हर तरह के किरदार प्ले करने को मिल जाते हैं, तो सारे शौक पूरे हो जाते हैं साथ साथ। That's very true. मैं वही अपने प्रोड्यूसर समर खान जो है हमारे, उनको यही कह रहा था यार कि मतलब मेरा तो जो दिल्ली सपना था एक्टिंग का वो तो पूरा हो ही रहा है, अब मेरा दूसरा दिल्ली सपना जो रह गया था वो भी थोड़ा बहुत पूरा हो रहा है। फौज की कहानी करके। अच्छा, एक चीज है जो मैंने पर्सनली आपको लेकर ऑब्जर्व की थी जब हम शूट कर रहे थे उस सीरियल का, सोनी का। तो एक होता था कि अभी अगर आपका शॉट नहीं है, यूजुअली क्या होता है जब एक्टर्स के शॉट अभी नहीं होते हैं, उसमें टाइम होता है तो सब चिल कर रहे होते हैं, कोई वैनिटी वैन में चला जाता है, कोई कहीं पर किसी सोफे पे ऐसे बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, फोन यूज कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, बेसिकली अपने दे आर देमसेल्व्स। आपको जो मैंने नोटिस किया था, और मैं आपको बहुत क्लियरली आज बोल रही हूँ, आई थिंक मैंने आपको उस टाइम भी बोली थी ये बात, यू वर ऑलवेज सो एक्टिव एंड you always looked like you are in the character of KK. ये कैसे करते थे आप? मेरे को समझ नहीं आती थी ये इंसान इतने एक्टिव रहते कैसे हैं। एंड हम सारे ऐसे बैठे हैं और अभी वेट कर रहे हैं हमारा सीन आएगा, हम जाएंगे शूट करने, आप मस्त घूम रहे हो पूरी तरह एक्टिव हो, यू आर नॉट इवन रेस्टिंग, यू आर नॉट इवन चिलिंग, यू आर सो इन द कैरेक्टर। हाउ डू यू डू दैट?
नहीं वो मतलब आई डोंट नो इफ इट्स अबाउट बीइंग इन कैरेक्टर और नॉट, बट एक्चुअली क्या होता है कि एक एक्टर की लाइफ में वेटिंग इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर या लाइफ्स। चाहे वो रोल आने की इंतजार हो, फिर रोल आ जाए तो उसके बाद शॉट आने की इंतजार हो। कभी कभी 6-6 7-7 घंटे वेट करना पड़ता है, और किसी को भी वेट करना पड़ता सही बात है। है। या इट कैन हैपन विद एनीबॉडी कि अगर लाइट करेक्ट नहीं है तो फिर आप शूट नहीं कर सकते, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, या कोई सही बात सीन है। कोई लंबा जा रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा। So time and waiting and patience is a very important part of या an actor's life. या So what I realized quite early on, luckily, is that if I become inactive in that time of waiting, then I'm not able to portray what I have to portray, you know, या as lifelike as possible as I want to. So उस समय में इनएक्टिविटी में एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ऐसा होता है कि आप थोड़े से बुझ से जाते हो ना, और बुझे हुए एक्टर को कोई नहीं देखना चाहता। सही बात है। क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने, इसलिए मैंने ऑब्जर्व किया था तब भी। You were तो always so active. हाँ, मैं प्रोएक्टिवली ये कोशिश करता हूँ कि वो वेटिंग टाइम में मैं जितना एक्टिव रहूं उतना बेटर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब उस चक्कर में मैं कभी 11-12 घंटे एक्चुअली लिटरली बैठता ही नहीं हूँ। तो तो और वो मुझे तब पता चलता है जब मैं घर वापस जाता हूँ, मेरे एंकल्स थोड़े से सोलन होते हैं। सही बात है। I mean, come on. But it's part of the game. I mean, it's my way of. I'm sure there must be there are other actors who are able to chill and also be Yeah. active in the same way, but I'm not able to do that. तो मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। ओह, बढ़िया। अच्छा, एक और चीज, अब जब आप अपनी जर्नी को देखते हो जो इतने सालों से रही है, आपने इतनी सारी फिल्म्स की है, शोज किए हैं, एंड ओटीटी भी कर रहे हो, थिएटर भी कर रहे हो, हाउ डू यू फील? बिकॉज जब इतने साल एक इंडस्ट्री को दे देते हो, तो मतलब कुछ ग्रैटिट्यूड है जो मन में कहीं ना कहीं आता है कि आपको इतने अच्छे अच्छे किरदार करने को मिले, या ऐसा अगर आपको वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करना हो, या आई वुड से वन लाइन में इसको डिस्क्राइब करना, हाउ यू वुड डू इट? बिकॉज स्ट्रगल्स भी अपने रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपको फर्स्ट शो जो आपका मिला था मुंबई जाने के बाद, वो काफी लंबे टाइम बाद मिला था, तो अब लगता है कि इट वाज ऑल वर्थ इट जितनी मेहनत मैंने की। या तो मैं एक्चुअली 95 में जब आया बम्बई तो मैं फिल्म करना चाहता था, और मेरी पहली फिल्म जो मुझे मिली वो 2001 में मुझे जी। मुझे मिली, जो मैंने साइन किया वो 2003 में आई 3 में थी, आई थी, राइट? यार का सुपरहिट फॉर्मूला। तो सो द थिंग इज के मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे लिए और किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को री इन्वेंट करते रहें। क्योंकि री इन्वेंशन से क्या होता है कि आप खुद से बोर नहीं होते और ऑडियंस आपसे बोर नहीं होती। सही बात है। एंड और इट्स आल्सो अबाउट लॉन्जेविटी ना, कि मतलब या शुरुआत तो हो गई, लेकिन अब कितना लंबा चलेगी ये गाड़ी। और तो मेरी दिली चाह यही है कि मैं अंत तक एक्टिंग ही करूं, जब तक मैं कर सकता हूं फिजिकली हेल्थ के साथ, और मेरे हाथ पांव ठीक ठाक अच्छी तरह से चलते रहें और मैं एक्टिंग करता रहूं। और उसके लिए मैं अपने आप को री इन्वेंट जितना कर पाता हूं, मैं कोशिश यही करता हूं कि वो होता जाए। तो लकीली अब क्या हुआ कि जैसे डिज्नी हॉटस्टार पर आर्या आया, और आर्या वाज इट वाज अ गैंगस्टर शेखावत जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। लेकिन फिर डिज्नी हॉटस्टार पे 2 साल बाद शूरवीर भी आया, जिसमें जिसमें I play a heroic character of a military commander. So I've been very lucky that way, that I'm able to traverse between through many different kinds of worlds, and I hope to continue to do that. तो in fact मेरी जो अगली फिल्म है जो मैं तेलुगु में मैं जो करूंगा इन्हीं के साथ, प्रवीण सतरू के साथ ही, जो वो उसके डायरेक्टर हैं, उसमें I play a heroic character now. Okay. Lala is a gang. Yeah. So so I like doing that. That it's that the canvas remains as wide and large ranged as possible. Yeah. Okay. So मेरा एक्चुअली अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि आगे और तेलुगु प्रोजेक्ट्स करने का कोई प्लान है, बट आपने मुझे जवाब दे दिया, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू फॉर दैट, एंड वेरी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट उसके साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम टुडे एंड बात करने के लिए, बिकॉज
इट्स सच अ प्लेजर जिसके साथ आपने पहले काम किया हो या जिनसे आप पहले इनफैक्ट मुलाकात भी कभी हुई हो और कुछ टाइम स्पेंड किया हो, उनसे आप इतने टाइम बाद रिकनेक्ट करो और वो भी किसी अच्छे प्रोजेक्ट, किसी अच्छी स्पेशल चीज के लिए. सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये हुआ एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, नो डाउट. Thank you, Sonakshi. Pleasure. And So do nice to see you you. do you remember? मेरे को याद है your birthday falls on 20th of April. The Yes, same yes. day as my father. And मैंने जब भी आपको विश किया है और मैंने आपको हमेशा मैसेज में लिख के दिया है ये कि आज it's मेरे my फादर father's का भी birthday. बर्थडे है. That's true. मुझे याद है. So yeah, Thank I you so mean, much. thank you very much and congratulations once again for the love that you are getting for the ghost and even for other projects as well because everyone loves your acting. Everyone does. Thank I'm sure about it. Thank you. Thank you But very thank you so much. much.